Hello guys, hope you are fine and taking good care of your health. Welcome to this video. In this video, we are starting chapter number 6 of physics, class 9th, and you know that in previous lecture we complete our chapter number 5, and today our topic is energy because we are solving short syllabus questions. So today our topic is energy, and first topic is work, but that is not included in short syllabus. That's why we ignore that topic, and we are starting energy. So the energy is an important and fundamental concept in science. It links almost all the natural phenomena. When we say that a body has energy, we mean that it has the ability to do work. Means when we say that a body has energy, we mean that it has the ability to do work. For example, water running down the stream has the ability to do work, so it possesses energy. The energy of running water can be used to run water mills or water turbines. So this is the basic concepts of energy. Now we come to the defines of energy. The define of energy is a body possesses energy. A body possesses energy if it is capable to do work. अगर किसी बॉडी में किसी ऑब्जेक्ट में जो काम करने की सलाहियत है वो कहाँ से आती है, उसकी एनर्जी से आती है. And now we discuss some examples of energy. Before defining, we discuss some example. Now we say maybe we can say these are types of एनर्जी. हम ये भी कह सकते हैं ये जो हैं ये एनर्जी की टाइप्स हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर भी इनको ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड chemical energy. These are the basic examples or types of energy. And first of all, we discuss first type of energy, that is mechanical energy. What is mechanical energy? The energy possessed by a body due to its motion or position is called mechanical energy. ऐसी एनर्जी की ऐसी टाइप जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन या पोजीशन की वजह से पोजेस्ड होती है, उसे क्या कहते हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. नाउ you can see there are two terms. First term is motion and second term is position. So we can divide mechanical energy in two types. So first of all is first type is kinetic energy and second type is potential energy. What is kinetic energy? The energy of a body due to its position is called kinetic energy. Now we discuss kinetic energy. First of all, we define kinetic energy. Energy in a body due to its motion. For example, flow of water you can see in dams. When water flow from dam and it produce इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आती है, या ये उस वाटर की मूवमेंट की वजह से, वो जो फ्लो करता है, बहुत तेज़ी से फ्लो करता है डैम से, तो उसकी मूवमेंट की वजह से जो उसमें एनर्जी मौजूद होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनर्जी है उसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट तो कर दिया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर आपके पास कहाँ से आती है? वो ज़ाहिर सी बात है वो भी किसी एनर्जी की किसी टाइप से आती होगी. तो वो कहाँ से आती है? वाटर के. जब वाटर फ्लो करता हुआ आता है बहुत तेज़ी से डैम से, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. तो ज़ाहिर सी बात है वाटर में भी कोई ना कोई एनर्जी मौजूद होगी, तो उसकी मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी. सो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. the energy
in a body due to its position is called potential energy. किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं, वी से दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy. Now we solve mathematical form of kinetic energy.